Assalamu alaikum everyone, and today I will be teaching you some distress tolerance skills. These skills you can use when you're going through some crisis in your life, or when you're going through any painful events in your life, or if you have any impulsive urges, or if you're going through some overwhelming emotions. So when you use these skills, you can really help yourself to overcome from those circumstances. जी, तो आज मैं आपको सिखाऊंगी स्किल्स जो आप यूज़ कर सकते हैं जब आप किसी परेशानी के हालात से गुज़र रहे हों, तो उन स्किल्स को यूज़ करके आप अपने जो परेशानी है उसको कम कर सकते हैं. So yes, let's move ahead. Yes, so distress tolerance skills and its uses. So, what it is used for? It is used when you're going through some painful events, emotions, or urges, and you know you can't make the things better right away. So, at that time, you can use this distress tolerance skills, also known as crisis survival skills. So, at that time, you can use these skills to overcome from that emotions and to even for the time being. So yes, what are the circumstances in which you can use these skills? For example, if there is any conflict at the work, or you had an argument with your friend, or the relationship just ended, or if there is any distressing event, or you are overwhelmed with the stress at work. So when these situations you are going through, you can use these skills which I will be teaching you soon to overcome from these circumstances. जी, तो क्राइसिस सर्वाइवल स्किल्स, जिसे हम डिस्ट्रेस टॉलरेंस स्किल्स भी कहते हैं, ये जब भी आप किसी परेशानी के हालात से गुजर रहे हो, या कोई आपको एकदम से अर्ज पैदा हो रही हो किसी चीज़ को करने की, कोई इम्पल्सिव एक्ट करने की, उन चीज़ों को या कोई परेशानी से आप गुज़र रहे हो और उन चीज़ों को आप उसी वक्त अगर ठीक नहीं कर सकते, तो आप ये स्किल्स जो मैं अभी आपको सिखाऊंगी वो यूज़ करके आप फॉर द टाइम बीइंग उस वक्त के लिए अच्छा महसूस कर सकते हैं. तो ये स्किल्स आप कब यूज़ कर सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर काम में कोई इख्तिलाफ़ पैदा हो जाए, या किसी दोस्त या घर के अफराद के साथ कोई बहस हो जाए, या काम के बहुत ज़्यादा वर्कलोड की वजह से आप बहुत जज़्बाती हो जाएं, या कोई डिस्ट्रेसिंग इवेंट या कोई मुश्किल हालात से आप गुज़र रहे हो, तो आपको जो मैं अभी स्किल सिखाऊंगी वो आप यूज़ कर सकते हैं उन हालात को फॉर द टाइम बीइंग ठीक करने के लिए और अपने आप को ठीक करने के लिए. सो यस, लेट्स मूव अहेड. So yes, there are 6 crisis survival skills. The stop skill, this stop, it's actually the acronym, and later on we will learn that what this S, D, O, and P stands for. So this stop skill, you can use it when you have any impulsive urges, or for example, if you had a fight with someone and you make the decision in anger. So to control those decisions which you make in when you are angry, or when you're not in a good condition, you can use this stop skill. And also you can use the skills when you have an impulsive urges, if you go through any stressful event. Okay, so second, we will see the pros and cons of acting on impulses, and if you resist your impulses, so what are the pros and cons. Tip skill, this tip skill, it is basically you can use it when you are angry. So you can really use this skill to calm down your anger. This TIP, it's also an acronym. It stands for 3 different things, and later on I'll explain you. Distract with accept. So for example, if you're going through any overwhelming situation, and at that time you want to help yourself to calm down, so you can use this accept skill. And also this accept, it stands for different things. It's also an acronym, so later on we will learn about that.
Self-soothing with senses. So when you're going through any stressful or painful event or any crisis, so how you can use your senses to calm down and to feel relaxed. Improve the movement if you're going through any crisis or any overwhelming situation, so how you can improve the movement. Also, this improve, it's also an acronym, and later on we will learn that what IMPROVE stands for. जी, तो 6 स्किल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं जब आप किसी परेशानी से गुजर रहे हो या कोई क्राइसिस से आप गुजर रहे हो। स्टॉप स्किल, ये स्टॉप स्किल आप तब यूज़ कर सकते हैं जब फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी किसी के साथ लड़ाई हो जाए और बाज़ औक़ात लड़ाई में हम जल्दबाज़ी में हम फ़ैसले ले लेते हैं और वो अक्सर गलत होते हैं, तो वो जो आपके अंदर वो जो चीज़ पैदा होती है कि अभी मुझे ये फ़ैसला लेना है, उस चीज़ को कैसे रोकते हैं, ये स्किल आप यूज़ करके उस चीज़ को आप रोक सकते हैं। और क्या होता है कि हमारे अंदर कुछ इम्पल्सिव अर्जेस भी पैदा हो जाती हैं कि हम हमारा बस दिल करता है कि हम उन अर्जेस पे उसी वक्त एक्ट करें और बाद में हमें बहुत सारे नुकसानात का सामना करना पड़ता है। तो आप ये स्टॉप स्किल मैं आपको बाद में सिखाऊंगी, आप ये उस वक्त यूज़ कर सकते हैं। प्रोज़ एंड कॉन्स मतलब फ़ायदे और नुकसान। अपने हमारे अंदर जो अर्जेस पैदा होती हैं, हम उन पर अगर अमल करें तो क्या हमें फ़ायदे और नुकसान है, और अगर हम उन अर्जेस को रोकें तो हमें क्या फ़ायदे और नुकसान मिलेंगे, तो ये हम सीखेंगे सेकंड पार्ट में। टिप स्किल, ये टिप स्किल जो है आप उस वक्त यूज़ कर सकते हैं जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो, तो अपने गुस्से को कैसे हम हेल्दी तरीके से डिस्चार्ज कर सकते हैं और अपने आप को उस वक्त कैसे संभालना है, आप ये टिप स्किल यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं अभी आपको बाद में सिखाऊंगी। डिस्ट्रैक्ट विद एक्सेप्ट, तो ये जो चीज़ है, आप जब किसी परेशानी के हालात से गुज़र रहे हों तो आप उस वक्त अपने आप को फॉर द टाइम बीइंग कैसे डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं ताकि आप रिलैक्स हो जाएं, और फिर जब आपका जो दिमाग है वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाए, फिर आप उन मामलात को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ये एक्सेप्ट स्किल यूज़ कर सकते हैं अपने आप को फॉर द टाइम बीइंग उन चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। सेल्फ सूदिंग विद सेंसेस का मतलब है कि आप अपनी सेंसेस जो है, हमारे नाक, हमारी आंखें, हमारे होंठ, हमारे कान, हमारे हाथ, इनको अपने सेंसेस को यूज़ करके अपने आप को आप कैसे रिलैक्स कर सकते हैं। इम्प्रूव द मूवमेंट, ये स्किल आप उस वक्त यूज़ कर सकते हैं जब आप क्राइसिस में गुजर रहे हों और आपने अपने आप को उस वक्त रिलैक्स करना है ताकि आप कोई गलत फ़ैसला ना लें। तो ये स्किल आप उस वक्त यूज़ कर सकते हैं जो मैं अभी आपको सिखाऊंगी। जी, सो लेट्स मूव अहेड। Yes, let's learn about the stop skill. You can use this skill when you have impulsive urges or you're going through any stressful event and you want to make a decision right away at that moment, or when you're angry, you can really use this skill. So what S stands for? S stands for stop. So when you stop, you don't react, you freeze. Your emotions might try to make you act without thinking, but you need to stop at that moment. Then what you need to do is T stands for take a step back. Take a step back from the situation and take a break. Take a deep breath and don't ever let your feelings make you act impulsively. Then after that, what you need to do is you need to O. O stands for observe. Observe what is going around you, what is going inside your mind, how is the situation, what's happening around you. Then observe your thoughts, what your thoughts are saying to you. Then P stands for proceed mindfully, means at this stage you will be aware that what are
your thoughts and what your thoughts are saying to you, what your feelings are telling you to do, and if you do anything, if it is good or bad for your goal. If it is good for your goals or if it is good for you, go for it. And if you think that it's right away, if I act on my impulses and urges and the decision I'm making will be bad for me, then proceed mindfully. Don't go for that situation, or don't go for that decision. So stop, it's actually the advanced form of timeout. As you know, the timeout is also used to control the anger. जी, स्टॉप स्किल आप कब यूज़ कर सकते हैं? जब आप गुस्से में हो, या आप जल्दबाजी में कोई फ़ैसला लें, या आपको कोई अपने अंदर अर्जेस पैदा हो किसी चीज़ को करने के लिए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एस एस का मतलब है स्टॉप, आपने रुक जाना है। आपने टी का मतलब है टेक अ स्टेप बैक, आपने एक कदम पीछे लेना है। आपने देखना है कि आसपास क्या हो रहा है। ओ ऑब्जर्व, आपने देखना है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है और आसपास क्या हो रहा है। प्रोसीड माइंडफुली पी, फिर आपने अपने सोचों को देखना है कि वो आपसे क्या कह रही हैं, और अगर वो सोचे आपको कुछ ऐसा कह रही हैं जिसमें लॉन्ग रन में आपको नुकसान पहुंच सकता है, तो उन सोचों पर उस वक्त अमल ना करें। और अगर आपकी सोचें आपको सही काम कह रही हैं और आप सोचते हैं कि अगर लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा होगा और आपको उससे कोई बेनिफिट होगा, तो तब उन सोचों पे अमल करें। लेकिन क्या होता है कि अक्सर हम जब गुस्से में होते हैं, अक्सर हमारी जो थॉट्स होती हैं, हमारी जो सोचें होती हैं, वो हमें कोई सही काम करने की राय नहीं देती। वो हमेशा हमें गलत फ़ैसला लेने के लिए मजबूर कर देती है हमारी सोचें। तो उस वक्त आप ये स्किल यूज़ कर सकते हैं ताकि आप कोई गलत फ़ैसला या गलत काम ना करें जिससे आपको आगे ज़िंदगी में नुकसान हो। So yes, let's move ahead. Yes, let's see what are the pros and cons when you act on your impulsive urges. So what are the pros? It is what we want to do based on our emotions. So at that time your emotions and your feelings tell you to do this thing. And so this is what is a pro of acting on impulse urge. The second one is it might release the bottled up emotions which you might having in that situations. For example, if you're angry and you want to shout on someone, so those emotions will be released when you will be shouting on the other person. Might make us feel better temporarily. For example, when you're angry and you want to shout at someone, and your emotions are then released, you feel better for the time being that your emotions are discharged. And takes a lot of effort to resist. Yes, so when you have impulse or urges to do something, you need a lot of self control to control yourself and those urges. So it takes a lot of effort to do that. Cons, it's not a strategic, means it's not gonna help you uh, for in future, for in long term. It's not helpful, does not help the situation. It does not help the situation means if you are angry and if you shouted at your employee or someone else, it will make situation more worse, because as I told you, that when you're going through crisis and the decisions that your mind make at that moment are mostly wrong. Disregard the consequences. For example, if you act on urges, it will you will not think that what will be the results, what will be the disadvantages when you will be acting on those urges. Often self-destructive, so mostly it's not good to act on impulses. It is oftenly it makes the thing worse, and it causes the destruction if you act on those impulse and urges.
It can damage your relationship and friendship. So yes, for example, if you had a fight with someone and you just take a decision that you just want to end up the relationship or something like that, at that moment it can cause you the damage in the long term. So yes, these are the pros and cons of acting on impulses. So as you can see, there are a lot of pros are these are the pros and these are the cons. So जी, आज देखते हैं कि अपने इम्पल्सेस और अर्जेस पे हम जब एक्ट करते हैं, जब हम गुस्से में होते हैं तो उनके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। तो आपको जब गुस्सा आता है और आप जब किसी और पर चिल्लाते हैं तो क्या प्रो आपको मिलता है, क्या फ़ायदा मिलता है? उन इमोशंस को आप फॉर द टाइम बीइंग डिस्चार्ज कर लेते हैं। आपको थोड़ी देर के लिए अच्छा महसूस होता है क्योंकि आपके अंदर जो गुस्सा भरा होता है आप दूसरे बंदे के ऊपर डिस्चार्ज कर देते हैं। और बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत होती है अपने उन इमोशंस पर काबू पाने के लिए। तो आप फॉर द टाइम बीइंग अच्छा महसूस करते हैं कि आपको अपने आप को सेल्फ कंट्रोल नहीं करना पड़ा। कॉन्स, इसके नुकसान क्या है? फ्यूचर में हम जब अर्जेस पे एक्ट करते हैं तो फ्यूचर में हमें बहुत नुकसानदेह होता है और बहुत ज़्यादा हमारे जो रिलेशनशिप्स वगैरह होते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंडशिप के साथ, वो टूट जाते हैं। और जो हमारी जो सिचुएशंस होती हैं, जो क्राइसिस वाली सिचुएशंस होती हैं, उनको और भी ख़राब कर देती हैं। उन इम्पल्सिव अर्जेस पे, उन चीज़ों पे हम एक्ट करते हैं। So yes, let's move ahead. So yes, let's see what are the pros and cons if you resist your impulsive urges. It helps you to make the better choices. It helps you to feel good about yourself because you will stay in control and you will feel good that you didn't act on your urges. It will help you to improve your relationship, and if you act strategically with positive consequences in long run, it's really gonna help you in this area as well. So what are the cons? What are the disadvantage if you resist your impulsive urges? There's only one disadvantage, that it's gonna take a lot of self-control to resist your urges. Okay, let's put this thing into example. For example, if you had an argument with your spouse, and then at the sudden moment your emotions and your thoughts are telling you to take a divorce from your spouse. So what you're gonna do is this decision might be bad for future, and you will feel it will damage your relationship with your spouse. And if you act on that impulse right away to take a divorce from your spouse, you will later on you will regret that why you acted on your impulses at that time and why you didn't stay in control. So if you really act on your impulses and urges at that time, you might face a lot of disadvantages. जी जो So let's learn about the tip skill. So this skill you can use when you're angry. So what you need to do is you need to put your face in a cold water, or you can put some ice on your face for 30 seconds. So when you do that, what will happen is it will really help you to relax and calm down, because when you will do that, it will it will give you the same effect as mammalian drive reflex. So when you do this, it will really help you to slow down your heart rates and will activate your parasympathetic nervous system, which you all know is also called
the relaxing system in that body. So when that relaxing system is activated, automatically your heart rates become your normal, and everything's they become normal. So yes, this is what T stands for. After that, when you're angry, you might have some angry energy inside you telling you to splash out, to throw the things here and there, to break the things. So what you can do is, in order to discharge that energy, you can do some exercise so that your angry energy is discharged in a healthy way, and you don't act on your emotions at that time. Third, P stands for pace breathing. Try after you are done with the exercise. Sit down somewhere nicely. Do some deep breathing exercise. Take the deep breath on the count of 4 in your brain. Pause for 4 to 7 seconds and exhale slowly on the count of 4 to 7. So when you do this pace breathing, it will activate the parasympathetic nervous system in your body, or as you know, it's called as relaxing system, and it releases some hormones that relaxes your brain and makes your heart rate, and even if you're going through anxiety, it makes everything normal. So yes, try to do this thing when you're angry. जी, सो आप टिप स्किल कैसे यूज़ कर सकते हैं जब आप गुस्से में हो? तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जाके अपना मुंह ठंडे पानी से धो लेना है, 30 सेकंड के लिए धोते रहना है, या अपने मुंह को किसी आइस बाउल में 30 मिनट तक रखें। तो आप जब ये काम करेंगी तो आपके बॉडी में एक सिस्टम होता है जिसे कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसे हम रिलैक्सिंग सिस्टम भी कहते हैं। ये एक्टिवेट हो जाता है और आपके अंदर जो आपकी दिल की धड़कन है उस वक्त तेज़ होती है जब आप गुस्से में होते हैं, उन चीज़ों को नॉर्मल कर देता है। उसके बाद आपको पता है, जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारे अंदर एक एनर्जी अंदर होती है कि कुछ तोड़ें या कुछ करें या कुछ किसी चीज़ को हिट करें। तो आप उस एनर्जी को हेल्दी तरीके से कैसे डिस्चार्ज कर सकते हैं? आप कोई एक्सरसाइज करें उस वक्त, ताकि वो जो एनर्जी है वो हेल्दी तरीके से रिलीज़ हो जाए। उसके बाद आप कहीं अच्छी सी जगह ढूंढ के आराम से बैठ जाएं, वहाँ पे आप डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें। आपने सांस अंदर लेनी है, अपने दिमाग में 4 तक गिनना है और आराम से लेनी है। फिर 4 से 7 सेकंड तक आपने अपनी सांस रोकनी है और उसके बाद आपने अपनी सांस छोड़नी है आराम से, अपने दिमाग में 7 तक गिनकर। तो अब जब आप ये काम करेंगे तो फिर से ये जो डीप ब्रीथिंग की एक्सरसाइज है आपकी बॉडी में रिलैक्सिंग सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसे हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, और आपकी हार्ट रेट और सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। सो यस, लेट्स मूव अहेड। So let's learn about distraction, the accept skill. Distraction, it's actually temporary. You're not completely ignoring your problems. You're just pushing them away for a while so that you cool down and you can handle that thing in a nice way. It's just like a hot pan, and you turn the stove off and you can return back when the pan it's cooled down. So let's learn about that. A. A stands for activity. What you can do, you can engage yourself in some activities. You can watch a TV, you can play, or you can do something to take your mind off. C stands for contribute. You can do something for someone. You can help someone. So when you help someone, it really gives you a nice feeling, and it gives you a feeling that I have no words to describe. When you help someone, that feeling which you get after you help someone, it's the most amazing feeling. So C, comparison. You can compare yourself to those who are less fortunate, or you who are dealing with the same situation and how they are handling it. E stands for emotions. So you can distract yourself by reading some emotional books or emotional stories, or watching any emotional serials, so that you get distracted by your emotions. P, push away.
You can push your situation away by leaving it for a while, or you can build an imaginary wall between yourself and the situation. T stands for thoughts. You can count to 10, you can color, you can paint so that you feel good, and your thoughts they just get distracted by painting or doing something. S stands for sensations. You can look around the five things around you. You can see their color, their texture. You can focus on them. You can smell something nice. Also, when you smell flowers or any perfumes or candles, they produce the serotonins and endorphins in your body. Just by the sensation of smell, it has a good impact on your body. Or you can take a hot or show a cold bath. जी, तो आप जब किसी प्रॉब्लम से गुज़र रहे हों तो उस वक़्त फॉर द टाइम बीइंग आप अपने आप को उस सिचुएशन से दूर कर सकते हैं, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ताकि आप जब ठंडे हो जाएँ उस सिचुएशन को आप फिर हल करें। तो अपने आप को उस वक़्त उस सिचुएशन से कैसे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हैं वो हम सीखते हैं। ए एक्टिविटी, आप कोई काम कर सकते हैं, जैसे कि आप टीवी देख सकते हैं, आप खेल सकते हैं, आप कोई गेम खेल सकते हैं, या पेंटिंग कर सकते हैं, या जो भी काम आपको पसंद हो। सी कंट्रीब्यूट, आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि जब आप किसी की हेल्प करते हैं और वो जो अंदर एक खुशी पैदा होती है, उस खुशी का कोई मुकाबला नहीं हो सकता, और आपको उस वक्त अच्छा महसूस होगा जब आप परेशानी से गुजर रहे हों। सी कंपैरिजन, आप अपने आप को उन लोगों के साथ कंपेयर करें जो आपसे आप जो आपके जितने लकी नहीं हैं, और जो आप ही की जैसी सिचुएशंस को फेस कर रहे हैं और उनके साथ कैसे डील करते हैं। ई इमोशंस, आप कोई इमोशनल बुक पढ़ सकते हैं, कोई इमोशनल स्टोरीज पढ़ सकते हैं, कोई इमोशनल ड्रामा देख सकते हैं, ताकि आप उस सिचुएशन से दूर हो सके अपने इमोशंस के थ्रू। पुश, आप उस सिचुएशन से दूर हो सकते हैं। आप अपने आप को कह सकते हैं कि मैं इस सिचुएशन के बारे में बाद में सोचूंगी, तो इसको अभी मैं साइड पे रखती हूँ, या आप अपने दिमाग में एक दीवार सी बना सकते हैं उस सिचुएशन से कि चले, जब मैं ठीक हो जाऊंगी, अच्छी हो जाऊंगी, जब मैं नॉर्मल हो जाऊंगी, तब मैं इसके बारे में सोचूंगी। फॉर द टाइम बीइंग मैं इसके बारे में नहीं सोचना चाहती। टी थॉट्स, आप कोई पेंटिंग वगैरह कर सकते हैं, ताकि जब पेंटिंग करेंगे तो आपकी जो थॉट्स होंगी वो उस पेंटिंग की तरफ चली जाएंगी। आप कलर्स के बारे में सोच सकती हैं उस वक्त। तो जब आपकी सोच उन कलर्स वगैरह में गुम जाएगी तो आप उस वक्त रिलैक्स हो जाएंगी। एस सेंसेशन, आप कोई चीज़ खा सकती हैं, अपने ज़बान को आप यूज़ करती हैं अच्छा फील करने के लिए। आप कोई चॉकलेट खा सकती हैं जो कि मुझे बहुत पसंद है, या कुछ भी आप खा सकती हैं जो आपको पसंद हो, या आप कोई परफ्यूम यूज़ कर सकती हैं, ताकि आप जब परफ्यूम यूज़ करेंगी तो आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स पैदा होंगे और आपको अच्छा महसूस होगा। आप कोई अच्छी सी सीन्स देख सकती है, जैसे कोई वाटरफॉल हो टीवी पे या ऐसा कुछ। तो आप अपनी सेंसेशंस को अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, अपने आप को उन प्रॉब्लम से डील करने के लिए फॉर द टाइम बीइंग उस वक्त में। सो यस, लेट्स मूव अहेड. So yes, let's learn about improve skill. I stands for imagery. So what you can do is, when you're going through any difficult situation, you can just sit down and do some nice imaginations. You can imagine a beach, a water flowing in front of you, and the cool wind is blowing around you, or you can imagine anything you like. So you feel good even with the imagination. Even with the imagining the positive stuff, you feel good. So C stands for create meaning. So when you're going through some crisis or some difficult situations, always think about the positive aspects of that situations. For example, if you're going through some hurdles in your life and the people around you, they're creating hurdles for you, and more hurdles are coming in your way, and they're just creating hurdles for you. So you can look at the positive aspect of that situation, that these hurdles are gonna make you strong. It's gonna improve your resilience. P prayer,
The best thing that works for me when you're going through any crisis or any difficult situations, you can just go in the mosque, you can sit there, you can cry in front of Allah, and you can ask help from Allah, and the way Allah helps you, nobody can do that. R stands for relaxation. You can do some stress reducing exercise, you can do some yoga, you can take some bath, or you can do anything that relaxes you. One thing in a moment. So what happens is, when we are going through difficult situations or crisis or a hard time in our life, our mind, it just puzzles up and we think about a lot of things. So what happens, you can focus on the nice thing happening around you, so your attention get distracted by your sensation of I. V stands for vacation. You can take a small brief break, you can go to the picnic, or you can go to the park, or anything that you feel good going. E stands for encouragement. It works the best, trust me. You can use the positive affirmations, like you can say to yourself, I will make it out of this, I can stand it, everything will be okay, I can do it, or anything that gives you, a hope. जी, तो आप क्या कर सकते हैं जब आप मुश्किल हालात से गुज़रते हैं, तो आप बैठ के अपने दिमाग में कोई भी अच्छे से सीन्स इमेजिन कर सकते हैं, जैसे आप बीच पे गए हुए हो और आपके सामने पानी बह रहा है और अच्छी सी हवा चल रही है, या कुछ भी जो आपको सोच के अच्छा लगता है वो आप सोच सकते हैं। सी का मतलब है क्रिएट मीनिंग। आप उन हालात से कुछ मतलब निकाल सकते हैं, जैसे कि आप कोई मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं, जैसे आप ऑफ़िस में काम करते हैं और अगर आपके जो सुपीरियर्स हैं या कोई भी है, या कोई भी हो आपके लिए हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं, आपके लिए परेशानियाँ क्रिएट कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये मुझे और भी स्ट्रॉन्ग करेंगी, और मेरी जो परेशानी से एक इंसान के अंदर एक ताकत होती है कि वो जब मुश्किल दौर से गुज़रता है, वो नॉर्मल आने में उसकी एक पावर होती है। तो ये चीज़ें जो वो होती हैं, जो हर्डल्स होती हैं, उस पावर को ज़्यादा करती हैं। आप जब इन चीज़ों से गुज़रते हैं तो आपकी जो रेज़िलियंस, जिस वो मेन लफ्ज़ जो है उसे कहते हैं रेज़िलियंस। रेज़िलियंस की जो पावर होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, आप खुद स्ट्रॉन्ग होते हैं। पी स्टैंड्स फॉर प्रेयर। आप मस्जिद जा सकते हैं, आप उधर नमाज पढ़ सकते हैं, आप अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, आप अल्लाह के सामने रो सकते हैं, और जिस तरीके से अल्लाह इंसान को ठीक करता है उसको फिक्स कर सकता है, किसी किसी के बस में वो नहीं है। रिलैक्सेशन, आप कुछ भी कर सकते हैं जिससे आप रिलैक्स हो। आपको योगा कर सकते हैं, आप कुछ भी आप जिससे आप रिलैक्स फील कर सकते हो वो चीज़ें आप कर सकते हैं। वन थिंग इन अ मोमेंट, जब आप किसी परेशानी से गुजर रहे हो और आसपास कोई चीज़, अच्छी चीज़ चल रही हो, जैसे कि टीवी पे कोई अच्छे वाटरफॉल्स के सीन है, तो आप उस पे फोकस कर सकते हैं ताकि आप उस परेशानी से फॉर द टाइम बीइंग के लिए निकल सके। वी वेकेशन, आप कोई छोटी सी ब्रेक ले सकते हैं, आप पिकनिक पे जा सकते हैं, आप कोई पार्क जा सकते हैं ताकि आपको अच्छा महसूस हो। ई इनकरेजमेंट, आप अपने आप को उस वक्त कह सकते हैं कि मैं इन परेशानियों से गुज़र सकती हूँ, और ये परेशानियाँ और ये जो मुश्किलें हैं मेरी ज़िंदगी में, ये मुझे और भी स्ट्रॉन्ग करेंगी, तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ताकत देंगी। सो यस, लेट्स मूव अहेड। Yes, so let's learn about how you can use your sensations when you're going through crisis to feel good. So what you can do, you can use your eyes, your vision. You can see the things around you, how they look, how their shape is, if they're small, if they're big, or you can look at the photographs, or you can look at the pictures and focus, so that your attention will go to those things by using the sensation of eye. You can hear the voice around you. You need to pay the close attention to those voices. For example, clicking of the clock on the wall, and the other things are like birds, rain, thunder, or you can play an instrument and you can focus on
your ears how the voice is, if it's loud or if it's low. You can smell some perfumes, or you can smell some flowers. So, and also these things, it produces the happy hormones inside your body, the sensations of smell. You can use your tongue, you can taste something good, something nice, some chocolates, or anything you can like. So you will use the sensation of your tongue, the taste thing, to get distracted from overwhelming feelings. You can touch something soft, some soft cushions, or you can take a massage, or you can brush your hair, so you feel good by the sensation of touch. जी, जब आप कोई क्राइसिस से गुज़र रहे हो तो आप अपने आस-पास जो प्यारी-प्यारी चीज़ें हैं उनको देख सकते हैं, उन पे फ़ोकस कर सकते हैं, उनका कलर क्या है, वो छोटी हैं, वो बड़ी हैं, आप कोई फ़ोटो एल्बम देख सकते हैं, आप सनसेट देख सकते हैं, ताकि आप अपने आँखों को यूज़ करके थोड़ी अच्छी फ़ीलिंग हासिल कर सकें। आप अपने कानों को यूज़ करके कैसे अच्छी फ़ीलिंग हासिल कर सकते हैं, आप आपके जो आस-पास जो वॉइसेस होती हैं अक्सर, जो जैसे कि बर्ड्स हो गई, बारिश हो गई, या कुछ भी आस-पास की जो वॉइसेस हैं उन पे फ़ोकस करें, ताकि आपका जो दिमाग है वो उस अ, सिचुएशन से थोड़ी देर के लिए निकल आए। आप कोई अच्छी परफ्यूम्स यूज़ कर सकती हैं, आप कोई फ्लावर स्मेल कर सकती हैं, उसके बाद आप कोई अच्छी चीज़ टेस्ट कर सकती हैं, जैसे कि चॉकलेट हो गई, आप कोई चीज़ टच कर सकती हैं, जैसे कि कुशन्स हो गए, आप कोई मसाज ले सकती हैं। तो इन चीज़ों से अपने सेंसेशंस को यूज़ करके, अपने 5 सेंसेस को यूज़ करके आप उस प्रॉब्लम से फॉर द टाइम बीइंग के लिए निकल सकते हैं, और अपने आप पर सेल्फ कंट्रोल हासिल कर सकती हैं। So yes, I hope my videos are informative for all of you, and I wish you all a really happy life. And yes, all of you, take care. Bye bye. Masalam.